Hi children, good morning. We'll start our class in 2-3 minutes, okay children? Because many students they need to add na? Just 5 minutes, okay? Chalo, bachon, shall we start? Good morning. I think we can start, okay? Yes, yesterday, one girl, I don't know who is that girl name because you're all new to me, na? Of course, I am also new to you. So, one girl has she posted me one doubt. What do you mean by what I call a biological name and standard name? Bacho, I think you yesterday little confused. You're understanding it. See, vernacular nomenclature matlab giving local names. You're understanding it. Please at least today try to listen and understand carefully. What is vernacular nomenclature? Yes, it is the type of nomenclature. इसमें 0.1% doubt भी नहीं है. But the vernacular nomenclature is not a standard nomenclature because it changes from one place to another place and one language to another language. Am I correct or not? Where standard nomenclature, sir, what do you mean by standard nomenclature? Wherever you go, आप अमेरिका जाओ, अंडमान निकोबार जाओ, कन्याकुमारी जाओ, कश्मीर जाओ, महाराष्ट्र में, understanding it, or you go anywhere, understanding it, this name should not be changed. Understanding it? That means wherever in this world, ये पूरा दुनिया में wherever you go, that name should not be changed. That type of names are called as what? Standard names. And that standard nomenclature के लिए Carolus Linnaeus gave one process. उसका नाम binomial nomenclature. Which nomenclature? Binomial nomenclature. And this binomial nomenclature, which is made up of genus and species name, and this binomial nomenclature names are called as what? Biological names. Understood? So at least now the student, I don't know who asked because मुझे इतना interaction नहीं ना, at least I did not even see you also, so I don't know whoever asked, but they got clear. Okay, Razia, she got cleared. Okay. Yes. Chalo. So yesterday, just yesterday only, the taxonomy has 3 steps. The first step, step number 1, what?
identification, but I did not explain. Sir, why I did not explain? Yesterday, I already gave the proper and clear reason for that. Okay, so I explained yesterday, I explained about what? Nomenclature. And today I'm explaining the next step of the what? The taxonomy is nothing but classification. Which one, bachcho? Classification. Okay, now see, either you need to understand what है ना क्लासिफिकेशन, मतलब आपको जो कुछ मन में आएगा वो तरीका से यू शुड नॉट क्लासिफाई दिस क्लासिफिकेशन वंस। एक बार आप क्लासिफिकेशन दिया मतलब पूरा दुनिया इट विल फॉलो। अंडरस्टैंड? सिर्फ महाराष्ट्र नहीं सर, आई एम महाराष्ट्र साइंटिस्ट सर, सिर्फ महाराष्ट्र में मेरा क्लासिफिकेशन चलता है सर, ये सब बिल्कुल नहीं होता है बेटा। एक बार एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन आपने दिया रिगार्डिंग वन ऑर्गेनिज्म, ये पूरा वर्ल्ड, understanding it, every scientist, every taxonomist on this earth, they have to follow the same classification. That means इतना standardized, इतना what I call quality classification देना है, मतलब there must be some rules. Am I correct or not? See, without rules, without regulations, for example, you are walking, you are driving on the road. When you are driving on the road, you are responsible for your life and you are also responsible for others life also. Am I correct or not? आप ध्यान से जाना है and आप दूसरा का ऊपर भी ध्यान देना है. Am I correct or not? नहीं सर, ये मेरा गाड़ी है सर, 2 लाख खर्चा करके मैं स्पोर्ट्स बाइक लिया सर, however I want I will go sir, मतलब you will be in jail. Am I correct or not? That means even you are walking on the road only, you need to follow the rules. Am I correct or not? Like that, when you are giving an information is very powerful. So that information, how many rules it must be having? You tell me. So this is a class. Anyone, for example, I am only there, I only wanted to do classification. मुझे मेरा मन में क्या मेरा मन में क्या मैं सोचेगा, that should not I follow. Understanding it? I need to follow a tarika, and the tarika only it is called as what is this? वो तरीका क्या है? What is the name of this? Taxonomic hierarchy. I repeat once again, taxonomic hierarchy. Very good, sir. ये तरीका कौन दिया? Who gave this tarika? Who told us classification should be done in this way only? Understanding it? The one who gave this taxonomic hierarchy is Carolus Linnaeus. Now tell me, who gave the taxonomic hierarchy? Who gave? Carolus Linnaeus. Understanding it? This Carolus Linnaeus gave the procedure of classification. Understanding it? This procedure of classification is called as taxonomic hierarchy. Understanding it? And in this taxonomic hierarchy, please understand, there are 7 levels are there. How many levels, bachcho? How many levels? Otherwise, if you want, I'll count also. Dekho, 1 kingdom. I will write for your understanding के लिए I will write 1 2 3 4 5 6 7. आपने काउंट किया ना बेटा? So how many are there? 7 categories are there. How many? Tell me. 7 categories are there, and these 7 are together called as levels of classification. Okay, this 7. That's why taxonomy it is also having it is also called as levels of classification. इधर तक फर्स्ट पॉइंट. आई डिड नॉट इवन टेल द सेकंड पॉइंट आल्सो. पहले पॉइंट समझ में आए ना बच्चों? फर्स्ट पॉइंट यू अंडरस्टूड? yes. Okay, now tell me how to do classification. How to do, how आप कैसे क्लासिफिकेशन करना है? सिंपल क्वेश्चन. Simple question. By following a method called as a taxonomic hierarchy. By following a method called as what? Taxonomic hierarchy. If you wanted to do, or if I wanted to do, if any scientist wanted to do classification, they need to follow the what? Taxonomic hierarchy.
समझ में ना बच्चों? एंड दिस टैक्सोनॉमिक हायरार्की system was given by whom? This Tariqa. Who gave it? Who gave this classification taxonomic hierarchy? Linnaeus. Understood बच्चों? Now according to Linnaeus taxonomic hierarchy, this hierarchy में 7 levels are there. How many levels are there? There are 7. What are they? The first one is kingdom. The second one is phylum, which is also called as a division. The third one is class. The fourth one is order, which is also called as cohort. Okay, and the fifth one is family, and the sixth one is genus, and the seventh one is what? Species. Understanding it? And this is 7 various levels are there now. Taxonomic hierarchy, it includes 7 various levels. That's why this is also called as levels of classification. So taxonomic hierarchy is made up of 7 levels. That's why these are called as what? Levels of classification. Now understood? I even revised it also. Safety के लिए और एक बार मैं explain किया. So now you understood? Okay, everyone, like all the 51 students. Okay, but yesterday's class में 56 students. Today क्या पांच लोग absent है क्या? चलो sometimes ऐसा होता है. Even absent is also required. Okay, now देखो the next point is just now what? Please explain again. Classification, if you wanted to do, if you want to classify any organism, you need to follow a procedure, and that procedure is called as a taxonomic hierarchy. And this taxonomic hierarchy was given by whom? Carolus Linnaeus. Understood? Whereas according to this Carolus Linnaeus, this taxonomic hierarchy, it has 7 levels. How many levels? 7 levels. And this 7 levels are there. That's why taxonomic hierarchy is also called as the levels of classification. Now you understood? और एक बार बोलो मैं, और एक बार बोलना है क्या? और you understood? Okay, if you take classification, आपको मन में क्या क्या आएगा, whatever you feel, you should not do the classification. Understanding it? आपका मन में क्या क्या सोचता है, that you should not follow that. Classification के लिए एक rule है. Understand? For example, if you wanted to walk on the road, you need to follow certain guidelines. Understanding it? Which is given by government. No sir, bike मेरा है, उसका खर्चा मेरा है, पेट्रोल मेरा है. Understanding it? Why should I listen? मतलब you will die. Understanding it or not? Like that. If you are doing classification, you need to follow some rules and regulations. Understanding it? And that procedure का नाम क्या है? The procedure of classification का क्या देता है हम नाम? Taxonomic hierarchy. And this taxonomic hierarchy, it was given by Carolus Linnaeus. Understanding it? And according to the Carolus Linnaeus taxonomic hierarchy, there are 7 levels of classification, and this all 7 levels of classification, you are calling it as simply levels of classification. Understood? So taxonomic hierarchy, it includes various levels. That's why you are calling it as levels of classification. This is the first point I explained. Understood now? Okay. That is branch beta. Yes, you Tejashwini, what you are telling is correct. इसमें आपका पॉइंट में देर इज नो डाउट, देर इज नो कंफ्यूजन, बट ये ब्रांच का नेम सिस्टमैटिक्स एंड टैक्सोनॉमी. अंडरस्टैंडिंग इट नॉट? वो पूरा ब्रांच के लिए, बट आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोसीजर ना. ये पूरा ब्रांच, सी वो बायोलॉजी ब्रांच का नाम. फॉर एग्जाम्पल जुआलॉजी इज देयर. एग्जाम्पल के लिए आई एम टेलिंग ओनली फॉर योर एग्जाम्पल. जुआलॉजी इज अ ब्रांच नेम. अंडरस्टैंडिंग इट? इसमें फिजियोलॉजी एक ब्लॉक है, एनिमल किंगडम एक ब्लॉक है. अंडरस्टैंडिंग इट? लाइक द टैक्सोनॉमी
एंड सिस्टमैटिक्स, दीज आर द ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी. इसमें क्लासिफिकेशन एक स्टेप. Okay, now the next one is, so first point, everyone, it is clear, I think so, because I repeated for at least 5 times, I repeated, so I think so you understood. Now the next one is the taxonomic hierarchy. I just told, एटलीस्ट 5 मिनट भी पूरा खत्म नहीं हुआ, जस्ट 5 मिनट के पहले आई टोल्ड यू देर आर 7 लेवल्स ऑफ क्लासिफिकेशन. एम आई करेक्ट नॉट? एंड व्हाट आर दैट लेवल्स? द फर्स्ट लेवल का नाम क्या है ना? किंगडम. एंड द सेकेंड लेवल का नाम क्या है ना? फाइलम, which is also called as a division, whereas the third level it is called as class, and the fourth level it is called as order, which is also called as cohort, whereas the fifth level is family, the sixth level is genus, and the seventh level is what? Species. Understood? So these are the 7 levels, and आपको दूसरा choice नहीं है बच्चों. ये 7 levels of taxonomy you have to practice and you have to remember. At least there is no chance at all. Understanding it? You have to remember all these 7 levels. Is this clear बच्चों? 7 levels. Yes, पहले बार पक्का, पहले बार है ना कि even if I also read for the first time, मुझे भी थोड़ा difficult है, but you need to practice 2-3 times. Okay, now 7 लेवल समझ में ना? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज. ओके, नाउ मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहे, प्लीज अंडरस्टैंड. कुछ डाउट्स आएगा तो यू प्लीज आस्क. ओके सर, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? देखो, यू आर डूइंग क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स. यू आर डूइंग व्हाट बच्चों? क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स. When you are doing the what I call animal classification, you need to use kingdom. Please understand मैं क्या बोल रहा हूं, प्लीज सुनो बच्चों. किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज. But the same thing, if you are classifying the plant, you need to use kingdom, and phylum का जगह पे you need to use what? Division. And next one is class, and order का जगह में you have to use what? Cohort. Understanding it? Whereas family, genus and species. बच्चों समझ में है ना? So when you are doing classification, when you are writing classification, phylum जगह पे प्लांट क्लासिफिकेशन को डिवीजन लिखना है, एंड ऑर्डर जगह पे प्लांट क्लासिफिकेशन में कोहर्ट लिखना है प्लांट क्लासिफिकेशन. इज दिस पॉइंट क्लियर बच्चों? बिकॉज मेनी स्टूडेंट्स विल कंफ्यूज इन दिस ओनली. यूजुअली है ना, एवरीवन विल लाइक कंफ्यूज. इट्स लाइक आदत. कंफ्यूज भी नहीं बच्चों, आई कांट से इवन कंफ्यूजन ऑल्सो. ये आदत हो जाएगा. किंगडम, फाइलम, क्लास. बट अरे यार, मैं एनिमल क्लासिफाई कर रहे, प्लांट क्लासिफाई कर रहे, थोड़ा ध्यान दो. मान लो इफ यू आर क्लासिफाइंग द प्लांट, देन फाइलम नहीं लिखना है बच्चों, फाइलम जगह पे डिवीजन लिखना है. आई एम नॉट टेलिंग दैट यू विल बी कंफ्यूज्ड. नो, वो आपका है ना आदत पड़ेगा. दैट इज द थिंग, दैट आदत है ना, यू नीड टू चेंज. ओके, ना second point look, yeah, sorry, third point. This is not second point, this is third point. 2 points I told. Now the third point, can I take confidently? Can I take, or still you wanted to ask anything? Yes, now I am going for third point. The third point is, देखो, each category, that means kingdom, phylum, class, that means हर एक category है ना, हर एक लेवल और कैटेगरी है ना, ये हर एक लेवल और कैटेगरी को हम बोलता है, क्या बोलते हैं बच्चों? पढ़ो, ये क्या है? टैक्सॉन. दैट मीन्स ये हर एक 7 लेवल्स आर देयर ना बच्चों. ये 7 लेवल्स में हर एक कैटेगरी, किंगडम एक कैटेगरी है. अंडरस्टैंडिंग इट? दिस इज कॉल्ड एज अ टैक्सॉन. सर पूरा नाम बोलिए सर, यू हैव टू कॉल इट एज टैक्सोनॉमिक कैटेगरी.
अंडरस्टैंडिंग। नाउ दिस कैटेगरी को हम क्या बोलते हैं? टैक्सॉन। एंड फाइलम, इट इज सेकंड टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, उसको बोलता है सेकंड टैक्सॉन। क्लास इज द थर्ड टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, उसको क्या बोलते हैं? द थर्ड टैक्सॉन। लाइक दैट हर एक रैंक है ना, हर एक कैटेगरी को हम क्या बोलना है बच्चों? टैक्सॉन बोलना है। थर्ड पॉइंट समझ में ना बच्चों? टैक्सॉन समझ में ना? हर एक कैटेगरी को हम बोलते हैं टैक्सॉन। थर्ड पॉइंट अंडरस्टूड? Okay, now the fourth point, a fourth point everyone can tell here, एक छोटा सात, seventh class kid also will tell, you tell, try to tell, of course if you tell wrong I am there na, so मेरा ऊपर विश्वास रखो, okay? If you can tell, otherwise no problem. Now tell you, ये देखो बच्चों, this is what a taxonomic hierarchy, which one is the lowest taxonomic hierarchy? बोलिए, है ना? सी देखो, डिड आई टेल आप कुछ, दैट मीन्स फोर्थ पॉइंट इज नॉट अ पॉइंट आल्सो, अंडरस्टैंडिंग इट? फोर्थ पॉइंट इज नॉट अ पॉइंट. नाउ यू टेल मी which one is the highest taxonomic category? Kingdom. So now tell me fourth point, is it a point? Is it a point here? Okay, so that there is not a big point also, understanding, very very easy. Okay, it's first of all not a point, but very important question, huh? This question you have to understand, sir इतना important question क्या है बच्चों? As you go from up to down, that means taxonomic hierarchy is there na, you are coming from kingdom to species, then the number of similarities between the organisms will be increases, whereas when you going from species to the kingdom level, the number of similarities will be decreasing. ये पॉइंट है ना, ध्यान से अच्छा से सुनना है एंड ध्यान से आप याद भी रखना है. when you are coming from kingdom to species, the number of similar टैक्सा मतलब प्लूरल, टैक्सॉन मतलब सिंगल. अंडरस्टैंड? इट्स प्लूरल सिंगुलर बच्चों. गुड, बट गुड क्वेश्चन. टैक्सा मतलब प्लूरल, टैक्सॉन मतलब एक ही है. ओके, चलो ओके. नाउ यू दिस पॉइंट यू अंडरस्टूड बच्चों? द नंबर ऑफ सिमिलरिटीज विल बी डिक्रीजिंग फ्रॉम किंगडम टू स्पीसीज, बट द नंबर ऑफ सिमिलरिटीज विल बी इंक्रीजिंग फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम. This point you understood बच्चों, very important point, and this is asked in your NEET exam also. NEET exam में this point is asked बच्चों. Okay, so can I take out this slide? Can I take this slide off? Okay, second slide लो क्या मैं? Wait, last point I'll repeat once again. Beta, if you are classifying any organism from kingdom to species, that means ऊपर से नीचे आ रहे हैं, then what happens ना, similarities होता है ना, it will be increasing. No, आप any organism को species से kingdom, that means नीचे से ऊपर आ रही है, then obviously the characters will be decreasing. Understood? और एक बार बोलो, और you understood? Kingdom to species the similarities will increase, and species to kingdom, that means नीचे से ऊपर जाएगा तो the. व्हाट्स योर डाउट? बोलिए सर. माई डाउट मतलब मैं देखा ही नहीं, सॉरी. दैट्स वाई आई यूज टू टेल बच्चों, टाइपिंग इज अ टाइम वेस्ट. ऑन योर माइक सर, आस्क योर डाउट. सी देखो, मैं एक बार सी एक वन साइड में आई एम एक्सप्लेनिंग यू, वन टाइम में आई एम राइटिंग, एंड सेम टाइम में टू सी चैट बॉक्स, कितना डिफिकल्ट है. I don't know why you speak. Of course, I never force any student to do that. But I am telling you, being a teacher, at least trust your teacher. It is always flexible if you speak, not type. See, she's telling that typed. Sir, where she typed, I don't even know. So type it again. Okay, I think she will type and she will send. Okay, can I change the slide, bachcho, now?
Yes, I am changing the slide. Okay. Yes, बच्चों. Yes, बच्चों. Now देखो. This we already discussed. Species is indivisible, stable, and static unit. Yes, yes, yes. Partly yes, because there are some species which are again divisible into some subspecies also. For example, crow is a species better. Crow is a species. But if you take the same crow, Americans will call Corvus splendens americana. Understand it? No, no, Indians will call it as what? Corvus splendens indica. That means, see, crow is same species. But again, some species are again divisible into small what I call groups, that is called subspecies. That's why not trinomial nomenclature has come. Yesterday's class mein binomial nomenclature is accepted by everyone, but still trinomial nomenclature has come. Why it has come? Because some they are divided into, see that. And one more thing also I need to tell you, and many people they don't like subspecies. Actually there, why there is no need. आपने सीक्वेंस ऑपोजिट लिया, हाँ, मतलब मेरा सीक्वेंस मतलब व्हाट इज दिस, समझ में नहीं आया बेटा. राज, what is राजेंद्र, रोहन राजेंद्र. Oh, राजेंद्र मतलब must be his father's name. रोहन is his name, I think so. क्या मास भी, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग बेटा. बट बेटा आई डोंट नो हिंदी और मराठी. मास पीसेस मतलब आई डोंट गेट दिस. सॉरी फॉर दैट. आई नीड टू लर्न सर. बीइंग ए टीचर आप ऐसा बोलेगा तो क्या क्या करूं. आई डोंट नो योर लैंग्वेज. चलो, he will type it again and he will send, no problem. We will continue now. uh, Taxonomic hierarchy में 7 levels are there, है ना. What are the 7 levels? Kingdom, what you call a phylum, class, order, family, genus and species. Correct only ना बच्चों. Now if you take the kingdom, kingdom देखो मैं इधर clearly लिखा highest category of the classification. Biological classification में the topmost chair किसका है? The top chair is obviously what? Kingdom. Understanding it? Whereas kingdom का नीचे phylum will be there. What will be there बच्चों? Kingdom का नीचे what will be there? Phylum. That means group of phylums. Understanding it? They are included under what? Kingdom. Kingdom का नीचे. Sir, you have taken sequence backwards. Species is first, kingdom is last. अरे यार क्या है सीक्वेंस बैकवर्ड्स. या स्पीसीज, या व्हाट ही इज आस्किंग ना. नाउ आई गॉट इट. या मैं नीचे, फॉर एग्जांपल इफ आई स्टार्ट classifying from peaches, that means species. So obviously the species है ना, the species I am taking it first. But sequence is a sequence. See, I will tell you एक रास्ता है बच्चों. यू प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. एक रास्ता है. देर आर सम पीपल हु विल ट्रैवल फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, एंड देर आर सम पीपल हु विल ट्रैवल फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, एंड देर आर सम पीपल हु विल जॉइन फ्रॉम द मिडिल आल्सो. Understanding it? But road is road only. Like that, taxonomic hierarchy is hierarchy only. Kingdom से what I call species. Whether you start from species to kingdom or kingdom to species, that is आपका wish. This is आपका आपका खुद का wish. I think Rohan, you understood. If I am correct, I don't know. Yes, he's telling yes. Okay, that's good. That's good. Very good. Now the next one is, if you take kingdom, kingdom it includes so many phylums. It includes so many phylums. Understanding it? Where if you take kingdom, if you take phylums, and almost every time phylum it ends with the name called as phyta. Sir, example बोलिए. Pteridophyta. Understanding it? Thallophyta. बच्चे, you're understanding it or not?
सर मोस्ट सर एवरी टाइम सर सर बेटा ऐसा मत बोलिए एवरी टाइम नहीं मोस्टली दैट्स व्हाई बिकॉज यू विल कंफ्यूज दैट्स व्हाई आई ऑलरेडी टोल्ड यू एवरी टाइम नहीं बेटा एवरी टाइम इट इज नॉट लाइक दैट मोस्टली वडगल फाइट understand for example sir they are yes they are division yes correct you are correct they are divisions only in terms of plants that is division in terms of animals that is what phylum you are correct you are 100% correct okay now the next one group of classes that means again the phylum it includes some classes understanding it whereas the division is divided into that means the phylum it is again divided into some classes understanding it whereas uska suffix is opsida or physi understanding it sir ek example boliye for example phaeophysi rhodophysi these are all what various what classes understanding it or bryopsida what is that bryopsida and pteridopsida so these are all what various classes understood bachcho that means what happens when you are doing classification kingdom it includes so many phylums and again phylums again they are divided into so many classes and again classes are again divided into so many orders understanding again orders are divided into so many families and families are again divided into so many genus and genus again divided into so many species अंडरस्टूड बच्चों नो 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 सर आप नीचे से लो ना आप ऊपर से अभी लिया ना आप ऊपर से मत लो सर यू टेक फ्रॉम द डाउन many species are included under genus understanding and many genus they included under what family and many families are included under what order and many orders are included under class and many classes are included under phylum and all these phylums they join together to form one kingdom so मैं ऊपर से नीचे लिया and नीचे से ऊपर भी लिया बेटा समझ में आ रही है आपको कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है ना टेल मी देयर इज नो प्रॉब्लम यू कैन आस्क एनी नंबर ऑफ डाउट्स क्लियर पक्का ना ओके इफ यू आर यू नेवर यू डोंट लाई सो नो प्रॉब्लम ओके वेयर एज यूजुअली बच्चों प्लीज अंडरलाइन माय वर्ड यूजुअली नॉट एवरी टाइम क्लास एक्सप्लेन क्लास मतलब बच्चों अगेन फाइलम है ना इट इज डिवाइडेड इनटू वेरियस क्लासेस अगेन बच्चों सुपर आइडिया आया मुझे एक्सेलेंट मुझे सुपर आइडिया आया हाँ देखो अभी आपको पक्का समझ में आएगा देखो नाउ चैतन्य एकेडमी इज देयर इससे इजी एग्जांपल you can't be able to get it now again CA academy it is made up of what many what क्लासरूम्स am I correct not हमारा एकेडमी में सीए बिल्डिंग इज देयर ना सीए बिल्डिंग इट इज मेड अप ऑफ मेनी क्लासरूम्स हमारा बिल्डिंग में इफ आई एम करेक्ट 17 क्लासरूम्स आर देयर इफ आई एम करेक्ट मुझे भूल गया अंडरस्टैंडिंग इट इफ आई एम करेक्ट 17 क्लासरूम्स आर देयर अंडरस्टैंडिंग इट ओके नाउ अगेन this classrooms are again divided into two types what are they biology classrooms understanding it and also what are maths classrooms understanding it again this maths classrooms and the biology classrooms is divided into 12th classroom and also 11th classrooms and again 11th classrooms mein understanding it sections understanding it A section B section and D section and again हर एक section में boys will be there and girls will be there and हर एक boy is a student and हर एक girl is a student अभी समझ में ना बच्चों like that चैतन्य एकेडमी लेट अस कंपेयर विद किंगडम एंड उसका क्लासरूम्स विद फाइलम एंड उसका वर्टिकल ब्रांचेस दैट मींस बायोलॉजी और मैथ्स दैट इज लाइक व्हाट क्लासेस एंड क्लास इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू व्हाट वर्टिकल वेरियस स्टैंडर्ड्स दैट मींस 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड क्लास मतलब वर्टिकल ऑर्डर एंड अगेन इसमें बॉय गर्ल दैट मींस फैमिली एंड अगेन इनटू व्हाट स्पीसीज दैट मींस इंडिविजुअल स्टूडेंट अभी समझ में ना बच्चों यू अंडरस्टूड नहीं सर आप ऐसा मत लो आप पीछे से लो हाँ एक स्टूडेंट ही इज अ बॉय दैट मीन्स एक स्टूडेंट ही इज अ बॉय और ही इज अ गर्ल present in A batch and A batch में he is doing 12th class and 12th class में he belongs to biology group and biology group में class number 12 में he sorry room number 14 में he is there and it is in चैतन्य एकेडमी सी देखो पीछे से भी मैंने लिया आगे से भी लिया
करेक्ट होने ना बेटा? Same like this only. Kingdom has many phylums, and many phylums, these phylums are again divided into classes, and classes are divided into, yes, correct, cells, tissues. Yes, correct only. Yes, perfect. Rohan, you are like excellent. Perfect example दिया आपने. Hope you are understanding बच्चों. Hope if you don't understand also, I don't have any problem. Hope I'm not confusing you, because confuse करना it's a crime. Okay, can I confidently take next slide, or you wanted to ask anything? Can I confidently go for another slide? Yes. Okay. If you say yes, your S is an order for me here. अरे यार क्लास आर कितना बार बोलूं साक्षी? क्लास मतलब it is one of the division under phylum. I think last time also you only asked. Class मतलब it is one of the division of phylum. Again, the phylum it is divides into many classes. And again, class it is divided into many orders. And many orders are divided into many families. And many families are divided into genus. And many genuses are divided into what species? Class is one of the group under phylum. Okay, sir, example of class. Sir, example of class is class. Let us take what do you call Bryophyta. Understanding it, and or nahi to Phaeophyce, Cyclostomata is also, and Aves is a class, and what do you call fishes is a class, and amphibians is a class, and reptilians मतलब snakes वगैरह सांप कीप आता है ना, that is also a class. Okay, yes, correct. Aves, spices, yes, reptilians, even mammals also a class. Okay, very good, very good. Now I will take the next slide. Image is third. Yes. Yes. देखो बेटा, मैं आपके लिए एग्जाम्पल्स भी लेके आया. देखो, किंगडम, एनिमेलिया. से आई एम टॉकिंग अबाउट ह्यूमन बींग्स. देखो, आपके लिए क्लैरिटी के लिए मैं आपको लिए देखो एग्जाम्पल्स भी लेके आया, इमेजेस भी लेके आया. नाउ 7 क्लासिफिकेशंस आर, सॉरी 7 कैटेगरीज आर देयर ना. नाउ देखो, किंगडम एनिमेलिया, phylum chordata, or class mammalia, and order primata, and family hominidae, genus homo, and species sapiens. देखो कितना क्यूट बेबी है. अंडरस्टैंडिंग इट. वेर एज नो सर, यू टेक अनदर वन. सो किंगडम एनिमेलिया, फाइलम कैट के लिए बोल रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट कैट. कॉर्डेटा, क्लास मेमेलिया, एंड ऑर्डर कॉर्निवोरा. कॉर्निवोरा मतलब दे विल ईट मीट. वटिकल दूसरा ऑर्गेनिज्म है ना, डेड बॉडीज वो खाता है. वेर एज फैमिली फिलिडे, एंड जीनस वटिकल फेलिस, एंड स्पीसीज वट डोमेस्टिकस, एंड कॉमन नेम इज कैट. बेटा समझ में है ना? Yes, sir, you need to classify various organisms. Various organisms. Okay. May, of course, I explained 2 examples. You can take many. How many number of examples you want, you can take. चलेगा ना बच्चों? Confusions नहीं है ना? देखो कितना अच्छे से. I don't know who. Harshada gave. Excellent. Very good. सर कैट वेज, या कैट वेज भी खाता है. कैट वेज भी खाता है. वो omnivorous बोलते हैं. Understanding it. But by default, it like more non-veg than veg. Understanding it. See, for example, I have one friend. He eat veg and non-veg, but he, अरे यार, carnivora मतलब it more likes to eat the what I call non-veg food. Understanding it. Cat, otherwise you examine है ना, आप एग्जामिन करो कैट को नॉन वेज दो वेज दो, विच अच्छा से खाएगा वो. यू ओनली चेक इट देन. उसको ऑप्शन नहीं इसलिए वेज भी खा रही है. वो जो मिलता है ना वो का
बाप रे इतना बच्चों प्लीज डोंट ट्रबल मी, आई डोंट नो टू रीड हिंदी, कतना है। बाप रे इतना हिंदी मुझे तो पता नहीं, प्लीज ओनली यू टाइप इट इन इंग्लिश ओनली, ओके। सर जीनस ऑफ लाइन इज पैंथ्रा, यस करेक्ट, यू आर करेक्ट आर्या। मुझे हिंदी ज्यादा पता नहीं है, आई थिंक आई टोल्ड यू, इफ आई डिड नॉट टेल आई एम सॉरी। मुझे हिंदी पता नहीं यार। ओके देखो वेरी नाइस, आई डोंट नो हु करेक्टेड मी, थैंक यू बेटा, यू करेक्टेड मी, आई एम रियली रियली सॉरी। ऑर्डर इज व्हाट पैंथ्रा। बच्चा बच्चों एक छोटा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, वेरी वेरी सॉरी। सो छोटा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, बिकॉज मैं फास्ट फास्ट टाइप करेगा ना, इसलिए थोड़ा गलती हो गया, सॉरी। पैंथ्रा यस जीनस, यू आर करेक्ट, you are 100% correct. So this is Felis and this is what Panthera. Okay, this is Panthera. So thanks for correcting me, very very nice. But sorry छोटा गलती हो गई, because मैं फटाफट फटाफट टाइप करेगा ना, because today I have to prepare notes, understand, tomorrow I have to take the lesson, so check करना थोड़ा टाइम नहीं मिला, sorry for that, okay, but thanks for correcting me. हाँ चलो दूसरा लूँ क्या, और कुछ बोलना है क्या, एनी मोर थिंग यू हैव टू टेल, नो, ओके वेरी नाइस। नाउ देखो बेटा, दिख रहे हैं ना आपको क्लियरली, समटाइम्स आई एम टॉकिंग अबाउट समटाइम्स बच्चों, नॉट एवरी टाइम। देखो समटाइम्स सम साइंटिस्ट आर देयर, रियली इट्स नॉट ए जोक, देयर आर सम साइंटिस्ट, दे आर थोड़ा टिपिकल होता है बच्चों, दे आर क्या बोलता है ना, दे वांट एवरी इंफॉर्मेशन टू बी देयर, like see there are really there are some people also, for example one of my friend is there, one of for example I am there, मैं थोड़ा like light आदमी है, मैं ज्यादा है ना, इतना ज्यादा कोई कोई चीज इतना सीरियसली नहीं लेते हैं मैं, ऑफ कोर्स मुझे भी सीरियसनेस आता है, बट मैक्सिमम टाइम्स आई एम वेरी लाइट पर्सन, अंडरस्टैंड इट। बट देयर इज वन ऑफ माय फ्रेंड, हिज नेम इज रीनू एंड ही इज आल्सो बायोलॉजी टीचर। मान लो कुछ स्टूडेंट गलती किया, मतलब ये क्यों गलती करता है, ये सब पक 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 करता ही रहता है, एंड उधर छोड़ता ही नहीं, एंड इवन ही विल कम टू द स्टाफ रूम, देखो ना ये क्या किया ना, ये कैसा करता है क्या कोई ऐसा कर, अरे ये क्यों वाई आर इतना एक्साइट कर रहे हैं, वाई आर यू गेटिंग एक्साइटेड, तो थोड़ा काम का चिल चिल रखो ना। आई यूज टू टेल लाइक दैट, दैट मीन्स सी देखो आई एम ए टीचर एंड ही इज ऑल्सो ए टीचर, बट देखो आई एम थोड़ा, मैं थोड़ा थोड़ा क्या ज्यादा ही ठंडा ही रहता है मैं, अंडरस्टैंड, एंड वाई ही इज हाइपर एक्टिव, you tell me, that means there are some scientists, they will finish their classification just in 7 categories, but there are some scientists are there, they want every detail, har ek detail of that organism should be covered, so that they did the finest level of classification. Sir, what do you mean by that? Kingdom, and again after the division, and again division, he divided into subdivision, better समझ में ना, and again he divided class into super class and subclass, and again he divided order into super order and suborder, and again he divided family into super family and subfamily, and again he divided genus into tribe, subtribe and subgenus, and subgenus, again subgenus का अंदर section, subsection, and species का अंदर subspecies, varieties and subvarieties, forma and subforma. so इतना सर, इतना हम फॉलो करना है बच्चों, मैं खुद ही, I am only telling ना, maximum of the scientists they don't follow. sir then why are you telling, but you should understand this type of classification is also there, बच्चों समझ में ना, and this is called as finest or micro level of classification, finest or micro level of classification. Usually no one will follow except very few scientists. बच्चा फॉर्मा मतलब अगेन ही स्पीसीज का अंदर सब 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 स्पीसीज होता है ना, अगेन सब स्पीसीज का अंदर एरियास होता है ना, अकॉर्डिंग टू द एरिया, दैट मीन्स फाइनेस्ट लेवल। फॉर्मा मतलब अगेन द लोअर लेवल ऑफ द स्पीसीज, again the lower level of the species, understand sir, एक example बोलिए, I'll tell you, crow, again American crow,
and again Australian crow, again Indian crow, again India mein, again Maharashtra crow. I think now we understood. Now crow is a species, now Indian crow is a subspecies, and again Maharashtrian crow is what? Forma. समझ में ना बेटा? Again Maharashtra mein Baramati also. Yes, that is called stupidity. Basically, that's why I told, because you will confuse, you will understand. Only some stupid scientists only will follow this. उसको बोलता है ना ऑर्थो, टिपिकल ऑर्थोडॉक्स पुराना टाइप ऑफ पीपल है ना, दे यूजुअली फॉलो दिस. बट यूजुअली 7 levels of classification is everyone follow. Usually no one will follow इतना clearly that super order, sub order, ये इतना नहीं करेगा. Understood? Whereas finest level classification of animals. Now this is a fine classification of what? Plants. Now the micro level of classification of animals में kingdom, phylum, subphylum, superclass, class, subclass, order, suborder, and superfamily, family, subfamily, genus, species, and subspecies. इसमें forma. That means the micro level classification of animals में forma is not there. ओके बच्चों, बट मैं खुद ही बोल रहे बच्चों, आई एम टीचर, एटलीस्ट ट्रस्ट योर टीचर. माइक्रो लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन नो वन विल फॉलो, बट दिस इज ऑल्सो देयर. तन्वी, वी हैव टू लर्न दिस लेवल. नो 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 बेटा, मैं खुद ही बोल रहे ना, आई वॉन्टेड टू टेल यू दिस, इतना लेवल तक क्लासिफिकेशन जाएगा, but you need not to remember. You need to say, then what we have to remember, only that 7 categories are there na. If you remember, that is okay. That is okay. Okay, chal, very nice. Can I take the next level bachcho? Sorry, next slide bachcho. Can I go for the next one? Yes sir. हम ये हमारा नोट्स में या लिखो, बिकॉज सी देखो आप तो लिखना है, क्योंकि ना यू शुड अंडरस्टैंड ना, दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, नॉट फॉर रीडिंग. ये याद करके एग्जाम पे तो नहीं आएगा बेटा, मैं आपको क्लियरली बोला, एग्जाम में तो नहीं आएगा. देन व्हाई वी हैव टू राइट सर? बेसिकली यू शुड अंडरस्टैंड ना, डोंट थिंक यू, बिकॉज इफ यू डोंट राइट ना, आपको क्या लगेगा ना, सी अभी तो याद रहेगा, एंड आफ्टर 2 months पक्का भूल जाएगा. मैं भी भूल जाएगा यार. आप क्या, आप तो बहुत छोटा बच्चे हैं, डेफिनेटली यू विल फॉरगेट. सो देन आफ्टर 2-3 months यू विल अंडरस्टैंड, हाँ ओनली 7 levels नहीं, इसका नीचे लेवल्स भी है. दैट मिनिमम अंडरस्टैंडिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो आपको आना है ना बेटा. Yes, sir. Broadly accepted. Yeah, correct. Yes, Shinde, Shinde. I think surname है, उसका नाम Jay Kumar. Sir, yes, Jay Kumar, you are perfect. Correct. I am going for the next one, बच्चों. Yes, today's last topic bachcho. With this, classification is done. There is nothing in classification. Understanding it? So classification topic is done. Okay bachcho. So the last topic of classification is taxon and category. Of course sir, what is a taxon and category matlab, please understood bachcho. Kingdom, phylum, class, order, family, tax, genus, and what you call genus, sorry, species. And this हर एक लेवल का हम बोलते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरी. विच कैटेगरी बच्चों? टैक्सोनॉमिक कैटेगरी. नाउ किंगडम में प्लांट्स, that means whatever the real organisms, please understand bachcho, whatever the real organisms that are included under that particular category, and that organisms का हम बोलते हैं टैक्सोन. बच्चों समझ में आना? और एक बार बोलो क्या बेटा? देखो I'll tell you very easily. I'll tell you kingdom. Kingdom, it is nothing but category. But kingdom में this animals are there. No, kingdom में plants are there. No, kingdom से microbes are there. That means this real living organisms are called as what? A taxon or taxa.
I think now you understood. See, I'll tell you very easily, पक्का I'll tell you very easily. देखो, हम क्या होता है ना, मार्क लिस्ट देता है, अंडरस्टैंडिंग, मार्क लिस्ट देता है, फर्स्ट रैंक, second rank, third rank, fourth rank, like that rank list. So we will put now this first rank is nothing but what category, but first rank किसको आया, साक्षी को आया. Now second rank किसको आया, some कल्याण को आया. Third rank किसको आया, some राकेश सर को आया. Like that, the real organism which is included under this rank is called as taxon. अभी समझ में? I think so. I am thinking so. You have to tell. I should not draw the conclusion whether you understood or not. See, रैंक को, दैट लेवल को, दैट पोजीशन को बोलता है हम कैटेगरी, एंड वो पोजीशन के अंदर कौन कौन आ रही है उसको बोलता है हम टैक्सॉन. समझ में आना बच्चों? ओके, विद दिस बेटा, विद दिस आई कंप्लीटेड व्हाट, क्लासिफिकेशन टॉपिक. ओके, एंड नेक्स्ट क्लास में देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड एज कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज. Understanding it? What is that, bachcho? Concept of what? Species. And that topic I will take. If you have any doubts, you please ask. Otherwise, I'll take leave. Concept of species. No, not species better. It is concept of species. Species concept बोलता है. Sir, like 1 is equal to good, 2 is equal to, sir. I don't know what is like 1 is equal to, समझ में नहीं आया, सॉरी. Gold, silver, first rank gold, silver. ऐसा नहीं है बेटा. आई थिंक सो. नो, इसमें गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज ऐसा नहीं होता है. किंगडम, see, this is not, I told only for your understanding. So kingdom, phylum, so ऐसा जाना है, understanding it. No, but kingdom is like a gold, what phylum is like a, no, silver, ऐसा बिल्कुल नहीं है. No, your concept is wrong. Sir, means kingdom, class and class are yes, correct. These are taxonomic categories. And इसका real biological unit, that means real organisms, उसको नीचे आता है ना, they are called as what, taxon. Means category of line is kingdom and its taxon is animal. Yes, correct. Yes, now it is. Yes, Jay Kumar told correct. Jay Kumar, your statement is correct. Chalo, can I take leave, bachcho, or you want to ask anything more? You want to ask anything more? No? Chalo, bye children, and मिलेगा again on Thursday. Okay, Thursday हम मिलेगा. Okay, bye children, bye.